Next we have ring structure of D positive glucose. This we have done already, but I have to tell you कि why ring structure की need, why was the need for ring structure, क्यों ring structure को discover किया गया था. So ring structure was discovered because there were limitations in open chain structure of glucose. So what were the limitations? First was that D plus glucose does not undergo certain reactions which are characteristics of aldehyde, like glucose does not form addition compound with sodium bisulfite and does not respond to Schiff's test. This I have told you before also in before classes. In your previous class ये मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, बट आई एम अगेन रिपीटिंग कि क्यों हमें रिंग स्ट्रक्चर की, व्हाई वाज रिंग स्ट्रक्चर नीडेड, why did the need arise for ring structure. तो पहला था कि जो रिंग क्योंकि अगर इफ इट इज अ एल्डिहाइड, अगर ये एल्डिहाइड है तो इट शुड हैव रिएक्टेड विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड इट शुड हैव रिएक्टेड विद शिफ, इट शुड हैव गिवन द शिफ टेस्ट. पर ये दोनों ही टेस्ट, दोनों एक रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड शिफ टेस्ट दैट इज नॉट गिवन बाय D plus glucose. और उसके पीछे रीजन यही है कि इन सॉल्यूशन फॉर्म इट एग्जिस्ट, इन एक्वस फॉर्म आई वुड से, इन एक्वस फॉर्म ये इट एग्जिस्ट एज अ एसिटल, ये एसिटल की फॉर्म में रिंग बना देता है. देन सेकेंड वॉज D positive glucose exists in two isomeric forms, alpha and beta glucose. We know that alpha glucose melting point is 419 Kelvin and specific rotation is 100 plus 112 degrees. And beta D glucose melting point है 423 degree Kelvin and specific rotation is 19 degrees. So it is only possible this kind of specific rotation if it is forming a acetal in aqueous solution. Then muta rotation, very important, this is in your syllabus also specifically mentioned. What is muta rotation? So see, it is the phenomenon of change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is known as muta rotation. See what happens, जैसे आपका ये ग्लूकोज है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है रिंग स्ट्रक्चर में, एसिटल फॉर्म में ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है एंड इट अंडरगोज अ स्पेसिफिक रोटेशन. इसकी दो फॉर्म्स हैं, अल्फा और बीटा, जिनकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आई हैव टोल्ड यू 112 and 19 degrees शो करता है. बट व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? दैट टू स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाने के लिए, व्हाट इज, ये क्या करता है कि फ्रॉम व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, जिसका जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज का, वो म्यूटा रोटेशन शो करता है 112 डिग्रीज जो अल्फा होता है. बट व्हेन इट एक्वायर्स इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम एक्वायर करता है तो इट डिक्रीजेज इट टू 52.7. और वहीं पे जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है 19 डिग्रीज, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में. बट व्हेन इट रीचेज इक्विलिब्रियम तो ये इंक्रीज कर देता है इस वैल्यू को 52.7 डिग्रीज. सो दिस इज द concept of muta rotation which is shown by glucose, and it means that it exists in ring structure in aqueous form. Then next fourth point is that D plus glucose, it forms two isomeric glucosides with methyl alcohol. It forms two isomeric glucosides with methyl alcohol in the presence of anhydrous HCl, in the presence of HCl, and when you react it with CH3OH with glucose, so it will give you this compound. This is methyl alpha and beta D glucoside. It is a mixture of two alpha and beta form, methyl alpha and
and beta D glucoside. It is the mixture of both. So they behave like, it means that glucose is behaving, because this reaction with methyl alcohol is given by acetals. So they behave like acetals and change back into glucose and methanol only under acidic conditions. So it means that it exists in acetal form in aqueous solution. Then fifth is, UV spectrum of glucose does not show the presence of aldehyde group. Okay, since it is existing in this acetal form, so when we draw it, अगर आप इसका UV spectra करें तो it will not show, because that is जो आपका aldehyde group है वो involved है acetal बनाने में. It is involved in acetylation process. उसका by loss of a water molecule it is involved. So UV spectrum में glucose जो है, it does not show the presence of aldehyde group. This is very important point. So that is why हमने ये conclude किया था कि जो glucose है, glucose and fructose they exist in ringed form, means mainly glucose, others are its isomers only. तो glucose जो है, it exists in ring form. These were the reasons that the ring form was discovered. Thank you.